Okay. Hi everyone, my name is Mansi Padechia. I'm a registered dietitian, diabetes educator, and a life member of Indian Dietetic Association. मेरी जर्नी 2004 से स्टार्ट हुआ जब भी आई एम वेरी कीन अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन बिकॉज बचपन से आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि खाना कैसे बनता है और हैविंग डायबिटिक इन माय फैमिली तो शुगर्स ऊपर नीचे होते थे माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर ऑलवेज यूज्ड के खाने पीने में ध्यान रखो and that's how I always interested why how food can make so much of difference. That was one of the motivation जैसे मैंने अपनी journey start की and that's why I took up this as a profession. मेरा BSc Home Science में हुआ है and then I did my majors in the food nutrition and dietetics. फिर post graduation हुआ 6 months का internship in the hospital, work with several nutritionists so that हम before working somewhere we have a better idea कि how to deal with the current I mean with the actual patients. So that's how it started. मैं currently मेरा clinic मुंबई में है एंड मेरा क्लिनिक का नाम है मानसीज न्यूट्रिशन क्लिनिक एंड मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 11 years से है एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन सो मेरी सर्विसेज में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट को वो कैसे खाते हैं लाइक व्हाई दे हैव मेडिकल कंडीशन व्हाट इज देयर लाइक अगर खाते हैं तो उनका फूड का पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है and how they can improve their overall immunity, their digestive system, their gut health और उनको समझाते भी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी होती है so my forte is more into diabetes blood pressure any metabolic conditions जैसे medical conditions रहती है वो मेरा forte clinical cases so that is what my forte is weight management PCOS kids health pregnancy women सो ये सारे डिफरेंट माइलस्टोन में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है तो ये सिचुएशन में क्या फूड खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए दैट इज व्हाट आई tell my patients on a regular basis and in thousands of clients which I have I mean I've met with them and given the diet consultations they all have achieved a lot of knowledge and understood how to take this as a lifestyle so understanding the diet करना बहुत important है and when I say diet it's not about the restriction because I believe कि restriction नहीं होना चाहिए it's about the right time right portions और right combination के nutrients से जब भी खाओगे then food अपने आप ही observe हो जाएगा so this is what we do it and so basically मेरा I would request everyone to log in Baby Chakra app and download the app and you can use my code that's the name of MANSI and keep doing a lot of blogs, a lot of information which I will be keep putting in. So I request you to follow that. एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का पेज नाम है डायटिशियन अंडरस्कोर मानसी सो यू कैन हैव अ लुक मैं बहुत सारी रेसिपीज आई क्रिएट लॉट ऑफ रेसिपीज एंड टेल यू हाउ टू मेक हेल्दी रेसिपीज इन योर डेली रूटीन तो खाना बोरिंग भी ना होए एंड यू कैन एंजॉय योर फूड एंड प्लस हेल्थ भी आपके साथ आए so this is what is we are like our motive is to enhance health in every individual so that is what we can do on a regular basis and आप please अपने questions जो भी है आपके chat box में keep putting in that so we can discuss it further in the later part of the session and I would and today's topic is very very interesting for all of you which is how vegetarian diet is for pregnant women is it safe or is it कि आपके कोई nutrients आपको पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे so this is a big question so our topic for today is a vegetarian diet is it safe during the pregnancy so getting back to the topic so vegetarian diets अपने Indian diets में vegetarian food is very very common and वो popularity हर एक जन के साथ बहुत ही बढ़ रही है and it has so many good benefits about it so if you're a woman who is planning a pregnancy or you're already pregnant now question is staying on a vegetarian diet safe or unsafe the great news is that being on a vegetarian diet is very, very healthy and definitely
like it is a thumbs up for you, so you can go ahead a vegetarian diet. कि आपको कुछ जरूरत नहीं है अपना अपना डाइट चेंज करने की, वो सोच से कि मेरे अगर मैं अच्छा पोर्शन नहीं खाऊंगी और अच्छा पौष्टिक खाना नहीं खाऊंगी मेरे चाइल्ड को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यू डोंट नीड टू चेंज योर diet from the vegetarian to non-vegetarian or to the vegetarian. वेजिटेरियन में भी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं. ये सेशन में आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लोग एनहांस कर सकते हैं और आपके चाइल्ड को न्यूट्रिशन और पौष्टिकता ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन दैट केस. Why vegetarian diet is super healthy way to eat, just like any other form of eating. Like अगर आप vegetarian हो या non vegetarian हो, like but आप variety अगर लाते हो अपने खाने में, तो as long as you pay attention to varied nutrients in that, then you will get all the nutrients, right, from the proteins, fiber, minerals and other nutrient as well. So आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कुछ मिस आउट होने वाला है. But how can that be done? It can be easily done by eating plenty of fruits, vegetables, legumes, dal, nuts and seeds. But ये आपको आपका भरोसा जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ इसके लिए नहीं करना है. यू हैव टू नॉट जस्ट गो बाय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट लुकिंग एट द साइंटिफिक रिसर्च दैट हैज एक्सप्लेन कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं प्रेग्नेंट वुमेन पे कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वेजिटेरियन फूड ऑन अ वुमन. So in 2015, 22 review papers, like research के papers को हम लोग ने review किया था और देखा था कि there were not major health concerns or defects or any deficiency was seen both in the mother and the baby. They both were very healthy. Around 22 studies में ऐसा पाया गया था. बट ऑन अदर हैंड एक चीज और ढूंढी गई थी कि उन्होंने इन द रिसर्च पेपर अबाउट they had a deficiency of the B12 and iron. So these were the two deficiencies they had observed in those 22 studies. Now, what is important of the iron in the pregnant woman? वो हम आगे आगे के सेशन में देखेंगे. In another study in 2010, we also tracked the diets and the health of 379 pregnant women और ऐसा पाया गया था उसमें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे आपका वजन बढ़ता है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था. So the excessive gestational weight gain was stable. It was not too fast, so that the risk of any of the weight भी ज्यादा बढ़ता है तो it's adding up the risk, right? So risk was lesser when you are eating in a systematic way with a more fiber rich foods, because vegetarian diet में fiber ज्यादा रहता है, right? So basically adding a vegetarian food was a benefit for the gestational weight gain during the pregnancy. So also preventing any other conditions for the babies also. अगर अच्छा fiber खाया है, nuts खाए हैं, so baby के chances of developing cholesterol or any other major concerns, diabetes, because ज्यादा fat वाला खाना भी खाएंगे तो that is passing through the placenta to your baby also. तो वो ज्यादा नुकसानकारक बेबी को भी हो सकता है. तो ये सारी चीज से हम लोग बच जाते हैं अगर हम लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं. So isn't it great? So we have one thumbs up for sure why vegetarian food is good. Now let's explore key nutrients which are important during what are the nutrients very important जो miss out हो सकते हैं या हुए हैं having a vegetarian food. The first is like iron. अब सबको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये डिटेक्ट भी करते हैं फर्स्ट चीज डॉक्टर मेंशन भी करेंगे आपका सीबीसी टेस्ट भी होगा उसमें हीमोग्लोबिन का चेकअप ज्यादातर होता है. सो हीमोग्लोबिन का चेकअप क्यों करते हैं? बिकॉज आयरन की रिक्वायरमेंट इन द प्रेगनेंसी बढ़ जाती है. बॉडीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर आयरन इज वे हायर बिकॉज न्यूट्रिएंट आपके जो खा रहे हो वो आपके बेबी तक पहुंचना चाहिए थ्रू द प्लेसेंटा. वो काम आयरन करता है. सो एंड इवन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन फॉर द आरबीसी इज ऑल्सो डन बाय द आयरन. सो अगर खून में ज्यादा आयरन नहीं है तो ये सारी हम लोग को फटीग, थकान या फीलिंग नॉट एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, ये सारी सिम्टम्स आ सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक ब्लड में आयरन का रेशियो ज्यादातर होना चाहिए. नाउ अनीमिया इज ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो ही मुझे अनीमिया होने वाला है.
स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन दोनों को ही अनीमिया हुआ है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन को होने, बट पॉसिबिलिटी इज हायर बिकॉज हमारे अगर मीट खाते हैं या तो नॉन वेज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, इट्स अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ आयरन. बट फॉर द वेजिटेरियन इट्स अ इनडायरेक्ट सोर्स. सो वी जस्ट हैव टू एंश्योर कि हम लोग उसकी पोर्शंस बढ़ाए. जैसे जो चीज में आयरन है वेजिटेरियन डाइट में, जैसे ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या तो फिर पोहा है, हलीम के दाने हैं, या तो फिर काले तिल के दाने हैं. तो ये सारे के पोर्शंस हम लोग बढ़ाए अपने खाने में. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग वंस इन अ वाइल और वंस इन 15 days, हम लोग इंश्योर करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस पी रहे खा रहे, लाइक अ ग्रीन वेजिटेबल जूस आपने डिसाइड किया है, तो you ensure that you are having on a regular basis, so that you are getting iron requirement on a regular basis, और levels भी धीरे धीरे से बढ़ रहा है. That is very important. And whenever you have a iron food, to ensure कि आप उसमें विटामिन सी ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग पोहा बनाते हैं, तो डेफिनेटली वी स्क्वीज सम लाइम टू इट. That adding a lime to your poha enhance the vitamin, like a quality of iron. The absorption is much better. खाना खा रहे बट ऑब्जॉर्व होना भी जरूरी है, राइट? सो ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा आयरन का, जब उसके साथ विटामिन सी है. So even for the non-vegetarian, if they're having a chicken or a meat, if you squeeze some lime to it, then enhancement of iron absorption is better. But today we are talking about how we can enhance green leafy vegetable, या तो फिर पोहा खाया, गार्डन क्रेस सीड्स खाया, हलीम के लड्डूज बनाए. तो वो सारे चीज के साथ अगर मैंने एक नींबू पानी पी लिया, या तो फ्रूट्स खा लिए इसमें विटामिन सी है, आंवला का शॉट पी लिया, so that enhances your vitamin C, and that can allow the absorption of your iron in much better way. So आपको प्रेगनेंसी में कुछ थकान या एनर्जी प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, and you will feel, and plus your baby is getting best nutrient in a possible way. That's about your iron. और प्लीज लिमिट द इनटेक ऑफ अ टी एंड कॉफी, बिकॉज जितना चाय कॉफी पियेंगे उतना ही आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज होने वाला है. सो प्लीज एंश्योर दैट यू डू नॉट हैव टू मच ऑफ टी कॉफी, especially after your meals. So having a tea coffee can be either in your breakfast or it can be mid morning, but never with your lunch or a dinner. काफी जन को हैबिट होती है कि डिनर के बाद एक कप चाय पी लेते हैं, तो वो चीज में आपका आयरन का अब्जॉर्प्शन, जो आपने भाजी पाला खाया है उसके साथ अब्जॉर्प्शन नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्ट्रीब्यूट आवर फूड इन अ राइट मैनर, एंड दैट्स अबाउट योर आयरन. नाउ अभी चीज इंपॉर्टेंट है अबाउट द कैल्शियम. कैल्शियम हर, अगर इवन आई एम श्योर डॉक्टर्स ने ये हमको कैल्सीमैक्स या शेल कैल की गोली हमेशा देते हैं, बट व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज दिस इज कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज बोन, टीथ, हेल्दी हार्ट, नर्व्स, मसल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग. आपको जब भी प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज होता है तभी बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए. तो वो सारी चीज को ध्यान में रखे कैल्शियम रिच फूड्स थ्रू आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हम लोग को कैल्शियम किस चीज में से मिल सकता है? तो कैल्शियम हमें हमें काउज मिल्क, देन वी कैन गेट इट फ्रॉम द सेसमे सीड, ड्रम स्टिक, देन वी कैन गेट इट फ्रॉम मशरूम. सो ये नाचनी नाचनी का पॉरिज कर सकते हो, नाचनी की रोटी खा सकते हो. ये सारी चीजें definitely very good in a calcium. So in some or the other way we can add it. Please ensure you have 2 servings of a milk and milk product a day. That can be in a form of a curd, paneer, or a milk. Or you can have 1 or 2 serving of like a nachni, either in the form of a nachni laddu or a nachni roti, or you can have it in form of nachni, like you can make a porridges also of that. So it's very important to add that. एंड कैल्शियम अच्छा होगा तो आपके जनरली बैक पेन्स होता है लैक्टेशन के बाद, मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा, वो सारी चिंताएं से आप मुक्त रह सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऐड कैल्शियम रिच फूड्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. अनदर प्रॉब्लम, लाइक अभी दूसरा चीज हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन कैसे मिलेगा, कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन तो होता ही नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं. बट मिसकंसेप्शन इज कि प्रोटीन कैन बी देयर इन अ, बट हम लोग कैसे खाते वो इम्पोर्टेंट है. So I'm sure like there is a problem with the good quality of a protein in vegetarian diet, but अगर हम लोग combination में खाते हैं
For example, there are like for example लाइसिन करके का असेंशियल अमीनो एसिड है जो दाल वगैरह में कम रहती है. तो अगर हम उसको राइस के साथ खाते हैं तो उसका ऑब्जॉर्प्शन और उसका क्वालिटी बढ़ जाता है. तो दाल राइस इज अ गुड कॉम्बिनेशन. सो अगर कॉम्बिनेशन में हम प्रोटीन वाले रिच फूड्स खाते हैं देन योर क्वालिटी ऑफ योर फूड इज एनहांस. किनुआ जो अभी ट्रेंडिंग है, किनुआ करके एक ग्रेन है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट 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 सोर्स ऑफ द प्रोटीन. उसमें हर 18 essential amino acids are available. So isn't it great? So you don't have to switch to any other type of diets like vegetarian or non-vegetarian. You can be vegetarian all through the pregnancy, but ensure that you have enough variety in on a regular basis. तो आपका कोई भी न्यूट्रिएंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. Then there is one more thing what we get benefited from vegetarian diet is fiber. Fiber अगर रहेगा तो constipation का issue नहीं रहेगा. Generally constipation का issue रहता है because weight बढ़ जाता है, पेट पे pressure आ जाता है, तो constipation भी कभी कभार होती है. So add like a fiber rich foods जैसे कि हम like a सब्जी, salad, soup regular basis में खाते हैं, then you can prevent yourself from the like a complications like a constipation. Constipation रहती है तो मन बहुत चिड़चिड़ा रह जाता है, like पूरा दिन पेट हैवी हैवी लगता है. So with that regards, vegetarian diet can definitely help you to improve your your constipation issues, or it can improve your overall digestive system. So that's a benefit. And protein requirement में I forgot to mention about in initial point कि protein requirement generally pregnant woman में बढ़ जाती है. Generally requirement of a protein is 50 gram for any woman, but according to a recommended dietary allowance. But जब भी pregnant woman होती है उसमें 15 ग्राम की requirement बढ़ जाती है. Now as it is अपने vegetarian diet में or any of the protein intake is lesser. अगर हम लोग breakfast भी खाते हैं सिर्फ चाय और पोहा खाते हैं, और लंच में जैसे रोटी सब्जी जस्ट सो देयर इज नो प्रोटीन टिल देयर, और इवनिंग स्नैक में कुरमुरा, और डिनर कैन बी जस्ट लाइक रोटी सब्जी अगेन. सो पूरे दिन में आप देखने जाओ तो प्रोटीन्स आर वेरी लिटिल. अगर हम लोग बेसिक्स में लाइक पोहा विद स्प्राउट्स या रोटी, लंच में रोटी दाल सब्जी मटकी सैलेड, और लंच इवनिंग स्नैक में थोड़ा सा मिल्क एंड फ्रूट्स एंड नट्स, एंड डिनर में अगर हम लोग रोटी दाल सब्जी अगेन खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं, और अगर पाव भाजी खाते हैं तो उसके साथ थोड़ा स्प्राउट सैलेड खाते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर फूड. सो योर आई वांट टू मेंशन दैट please emphasize on a protein intake and emphasize on a good vegetable intake and nuts as well. Nuts जैसे अपने बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप पूरे दिन में almonds, walnuts, pumpkin seeds, sesame seeds, अलसी के दाने, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं in some or the other way. That's how you can improvise your overall nutrition through the day. So कोई problem नहीं है. Yes, definitely having a vegetarian is a safe thing to go ahead. But when how much you are making attempt or paying attention to your nutrients, that is very important. Then you are definitely fine. Then there is no compromise on your health for sure. So I hope you have got a synopsis what I'm trying to say today, and we can definitely have a question answer in next 15 minutes, and I can solve all your queries and can tell you how you can improvise your diets. So what are types of vegetarian diets? So types of vegetarian diets, now there are different types of vegetarian diets, like I'm not sure, but there's a vegan diet, vegetarian diet, these are the two combinations. But vegetarian diet has to be so Madhu says like what type of vegetarian diet is? Vegetarian diet means it's more of a fiber and it's only dairy products. If you are removing dairy, then it's a vegan diet. But vegetarian diets has everything. So there is no different types of vegetarian diet. Achal, what happens if you don't eat meal while pregnant? So if you don't eat meat, that's what I mentioned. Like it's definitely fine if you don't eat meat while pregnant woman, being a pregnant, you are still getting the nutrients from your proteins as well. Like a meat is one of the best source of the protein. But if you're ensuring you're having a dal, curds,
paneer, then nuts in your entire day, then you are not compromising on your protein requirement. So the idea of having a meat was for the iron and the protein. So if you are ensuring you are adding in a substantial way, then there is no problem. सीता, मैं 6 months प्रेग्नेंट हूँ, वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी है या मैं नॉन वेज खा सकती हूँ? दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, यू कैन डिवाइड इट. ऐसा नहीं है कि आप को स्विच करना है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन. अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आप इजीली खा सकते हो. there is no problem with your pregnancy. As I said, as per the studies, there were no complications for the baby as well as for the women who are pregnant. Mothers को कोई भी दिक्कत नहीं होती है. They are definitely fine with eating any form of, but just ensure that आप अटेंशन पे करो कि आपके जो तत्व जाना चाहिए, जैसे आपके प्रोटीन्स रिच फूड, जैसे आपका होल ग्रेन्स है, वो पूरे दिन में जाने चाहिए. अगर वो नहीं जाते तो डेफिशिएंसीज हो सकती है. या मनीषा, हाय डॉक्टर, मैं 7 months गर्भावती हूँ, मैं शाकाहारी हूँ पर मुझे नॉनवेज खाने की उत्सुकता होती है, क्या करना चाहिए? सो दिस इज डिपेंड्स ऑन यू, बट बाय यू आपको क्यों उत्सुकता होती है, दैट ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो दूसरे खा रहे लिए इसके लिए आपको उत्सुकता होती है, और व्हाट इज द रीजन, लाइक अगर आपने टेस्ट किया है पहले, व्हाट इज इट, दैट इट डिपेंड्स, आपका रीजन क्या है. How can I get protein without eating meat while being while being pregnant? So you get protein. So I can say uh, about 50 grams of paneer gives you about 7 grams of protein. 1 cup of dal gives you about 7 grams of protein. So अगर पूरे दिन में आप distribute करते हो, तो then you can in a day, if you have enough protein, which is dairy product or of dals or a nuts or seeds, you can definitely achieve your protein requirement, which is 65 grams on an average. So it's all about how you have what you have through the day. महिमा, शाकाहारी खाने से शरीर में पोषण की कमी होगी क्या? बच्चे स्वस्थ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. एक मिसकंसेप्शन है कि शाकाहारी खाने से शरीर में पोषण की कमी होती है. तो पोषण की कमी क्यों हो सकती है? अगर आप खाना खा रहे हो पर ऑब्जॉर्ब नहीं होता है तो कमी हो सकती है. इसके लिए आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है. अगर आपको एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपका खाना पाचन नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है. बट अपेरेंटली अगर आप दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स और नट्स और सीड्स खा रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना तो आपको या तो फिर आपके बच्चे को. हेलो डॉक्टर, कौन से न्यूट्रिएंट अच्छे हैं प्रेगनेंसी में, कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए? फॉलिक एसिड इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलिक एसिड करके जो मिनरल विटामिन है, सो B6, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको नट्स में से मिलता है, जैसे आलमंड्स है, वॉलनट्स है, सीड्स है, वो सब आपको फॉलिक एसिड, आप उसको यू गेट इट फ्रॉम फॉलिक एसिड फ्रॉम दिस आलमंड्स, नट्स एंड सीड्स. So please ensure you have that. विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन B12 जनरली आपको डेयरी प्रोडक्ट में से मिलते हैं या तो फिर एग्स में मिलते हैं. अगर एग्स नहीं खा सकते हो आप, डेफिनेटली डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही खा सकते हो. सो एटलीस्ट, और जनरली डेफिशिएंसी होती है तो सप्लीमेंटेशन से भी आप अपने लेवल बढ़ा सकते हो. देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप प्रोटीन अच्छा खाओ. सो देयर इज लॉट ऑफ nutrients which is required during the pregnancy. Yeah. What are the Indian foods to avoid during the pregnancy? So Indian foods, so there is grandma's नुस्खे जनरली बोलते हैं कि पपाया गर्म करता है, एंड कुछ चीजें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए. But as per the science, there is not something which you have to really minus. Generally, body heat बढ़ती है, इसके लिए garlic and too much of ginger intake to be avoided. So certain herbs to be avoided, but majorly garlic, जो गर्म चीज बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, generally you can avoid that just because so that you're comfortable. Nothing with regards to that is going to affect your baby or you will have any difficulties. लंबे समय के लिए हेल्दी है? वेजिटेरियन डाइट लंबे समय के लिए हेल्दी है. डेफिनेटली आई एम टुवर्ड्स eating vegetarian diet, because if you pay attention to the right nutrients, varied nutrients, then आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है.
In fact, your skin, your health, your blood reports, everything will be रेसिप्रोकेटिंग विथ योर वेजिटेरियन डाइट. जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक अगर हमारे पास आते हैं तो हम लोग इनका इनके डाइट में इतना सारा फाइबर ऐड करते हैं, प्रोटीन जैसे कि दूध, दाल है, मूंग है, स्प्राउट्स है, वो ऐड करते हैं, जैसे उनकी शक्कर भी कम होती है. सो there is no problem with a vegetarian diet if you eat in a systematic way, and that is going to improve your health in a, there is no compromise in your health. Last question, Trisha, what are the vegetables or the fruits to avoid during the pregnancy? So about the about the fruits, they say like a papaya to be avoided. Again, with a old concept that वो गर्मी लाती है body में, but again there is no science behind it. And vegetables, all vegetables are fine. If you think you can tell me what vegetables you have been restricting during the during your pregnancy. As per the science, there is not much of restrictions to be given during the pregnancy. So takeaway messages, definitely thumbs up for the vegetarian diet. You can have it, but pay attention to varied nutrients. Then you will get everything like a protein, vitamins, minerals, fiber, omega 3. आपको सभी पौष्टिकता मिलेगी. बट ये इजीली कैसे अवेलेबल हो सकता है, जब भी आप अपने प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, दाल्स, नट्स, सीड्स, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर अपने खाने में लाते हो, तो कोई भी नुकसान नहीं है आपका. आप और अपना बेबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनेगा, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट इज अ पावर हाउस ऑफ द एनर्जी. So and it's very economical also. So I would suggest everyone to go ahead, have a very healthy pregnancy, enjoy your phase, eat healthy, eat love, everything, and just have a best of your life, this milestone of your life. Yeah. And about, I would suggest if you all can follow me on my Instagram page, that is dietitian_Mansi, and also you can download Baby Chakra app and follow my code, which is MANSI Mansi. So you can have a look with a lot of blogs or a lot of articles which I'll be sharing in the coming future. Thank you. I had a great time talking with you all. If you have any questions, please get in touch through Baby Chakra app, and I will be pleased to answer each and every queries with you. Thank you.